Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Awais and I'm the General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I warmly welcome you all here in today's online session hosted by Sindh Educational Organization. And today's session is all about breaking barrier, women empowerment in STEAM. And in today's session, we'll be having the guest speaker, Ms. Ramla, who is having the bachelor's degree in electrical engineering from NUST Islamabad. So without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker for the further proceeding over today's session. So over to you, Ms. Ramla. Thank you so much. First of all, just let me know I'm audible to you guys, and I'm Yes, you are audible. visible to You you are as well. audible. Just let me know I'm audible and visible to you all. Yes, Okay. everything is all right. Okay. Let me just share the slides, and we start. So, Assalamu alaikum everyone. This is Ramla Akhtar, and first of all, thank you for the warm welcome. And now let's start. So, today our topic is empowering women in STEM through breaking the barriers. Okay. So, starting off with our introduction, what does actually women empowerment mean? Women empowerment means to give the women the power and the freedom to make their own choices and have equal opportunities in all the aspects of life. Um, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट हम इस चीज़ को कहेंगे कि गिविंग वुमेन देयर राइट्स their fundamental rights and their potential and like giving them the courage to unleash their potential is basically women empowerment. Now the next question is that why women empowerment is essential or crucial. So firstly, if I just roughly talk about 48 to 49% of the population of Pakistan, if I only talk about our country, 48 to 49% of the population of Pakistan is women. Like they're comprising of almost half of the population of Pakistan. So like if half of the population of Pakistan is suppressed, or like they're not being able to represent themselves, then how can we expect a nation to be in the successful states or to be in the future successful states? So this poses a very great question, and then it comes into our mind that yes, the empowerment of women is necessary for innovation and progress. Now, the next thing that comes into our mind when we talk about women empowerment is the barriers, or I must say, the hurdles or the obstacles that come in our way. और अगर हम बात करने लग जाएं उन ऑब्स्टिकल्स की या उन बैरियर्स की तो आई गेस वी विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम. सो हियर आई केम अप विद ओनली 3 बैरियर्स जिनकी आज हम बात करेंगे. लाइक विल टॉक अबाउट देम इन ग्रेट डिटेल, and they are the gender biasness, number one, and the second one is the lack of representation, and the third one is the limited opportunities. Okay, so talking about them one by one. Number one is the lack of representation. Now, what does lack of representation mean? तो आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी ऑल सी के देयर आर वेरी लेस वुमेन. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय डिपार्टमेंट सीक्स, तो उसमें like my department is department of electrical engineering and computer science, like it is a technical department. और उसमें if we statistically see तो less than 25% of the population of our department is females. Like we can see there are very less women as compared to men, and this is known as basically lack of representation, that we do not get enough courage, or we do not get enough confidence, or we do not get enough rights to represent ourselves in the technological fields. And this leads us to demotivates us to such an extent that the girls don't even bother to try to stand up for themselves and to do something that they have always wanted to do. So these are the barriers. But what if the representation of women is empowered? It leads to a better nation, and it leads to role models that inspires the next generation. As we all know, the next generation always follows the do's and the don'ts of the previous generation. So if our generation does not stand for it, or like does not stand against it, the future girls or the future generation will also have to face such issues that the girls of today's generation are facing. The second one is mentorship and support. I would say mentorship इतनी एक ज़रूरी चीज़ है कि someone cannot reach up to their goal to that level if they do not have a mentor.
जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, if like all of you have guys have asked me that give us one advice that will be fruitful to us, so I would say कि you guys should have a mentor. The mentor could be your father, your mother, or anyone that has inspired you through their journey. Like I myself, I have a mentor and have been following her since so long. Uh, what could be the role of the mentor in our lives? We see him struggling through the hardships and coming up very strong. और ये चीज़ हमारी लाइफ पे इतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है कि we get to motivate ourselves, we get to inspire ourselves, and this is something that is very important for us to be striving hard in our goals or like for achieving our goals. Secondly, now we are going to talk about the measures that we should take for the empowerment of the woman. So number one is the mentorship and support. Like if you provide even the mentorship and support programs to the young girls out there, it can help them a lot to build or to boost their confidence and to unleash their potential. The other way is the overcoming biasness or the gender biasness. जब भी जेंडर बायसनेस की बात आती है तो हमारे जहनों में एक ही सवाल आता है कि लड़का होगा तो इंजीनियर और लड़की होगी तो डॉक्टर. Okay, so I'm starting. So I was talking about the gender biasness. Gender biasness means that women are not given the equal rights to represent themselves. They are not given equal opportunities, and they're not given recognition as well. That is very important. So, overcoming bias. Now, how can we overcome biasness? First of all, we need to change the mentalities of the people for overcoming the biasness, and we need to create the awareness programs and implementing policies. Kyunki a very famous quote is that actions speak louder than words. So wo jo actions hain, they are actually the policies that we are implementing. We should implement, I must say, because we are not implementing nowadays. Then there comes the education and the training. Education and training is something that is really important to empower not only the women but also the young nations as well. Access to quality education and training is vital for the women to excel in STEM fields. Now, what does quality education mean? Quality education means that not only the academics but also the skill development and the personal growth as well. बहुत सारे लोग मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज दैट वी आर नॉट गिवन द क्वालिटी एजुकेशन, वी आर नॉट गिवन द प्रॉपर ट्रेनिंग, वी आर नॉट गिवन द skill development education, and that is very important. Coming towards that point, providing equal opportunities and learning and skill development is crucial for their success, or for the success of the women, or for the success of everyone, not even the women. यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी कि one thing is academic excellence and the other is skill development. I must say दोनों बहुत different चीजें हैं. Academic excellence is like you get to learn about a subject, you get to learn the general idea of the subject. And skill development is you get the hands-on experience on something and you become proficient in it, and then you start to cash the skill and then you start to earn. So they both are difficult things. और यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे नहीं सिखाया जाता है. एंड जब हम स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं तो ओनली द एकेडमिक एक्सेलेंस इज नथिंग फॉर अस. सो दैट्स व्हाई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द empowerment of women and for the empowerment of nation as well. Secondly, I want to say here that learn to say no is your motto for today. Learn to say no where you think is important. बहुत सारे लोग ना करना नहीं सीख पाते हैं. आई वुड से कि ये एक एजुकेशन का पार्ट होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर आवर राइट्स वी नीड टू फाइट. और फाइटिंग में जो एक मेन चीज आती है दैट इज सेइंग नो टू समथिंग दैट आवर हार्ट डजंट एक्सेप्ट. So learn to say no. This is today's motto. Then there comes the fostering inclusive workshops. In easy words, I would say or sharing my personal experience, like I live in Islamabad, I'm from NAST. तो मैंने वहाँ पे मुझे इत्तेफाक हुआ 2 से 3 वर्क प्लेसेस पे जाने का. एंड व्हाट आई सॉ देयर कि वहाँ पे जो एक वर्क प्लेस पे जो एक इन्वायरमेंट है
दैट इज सो फ्रेंडली, सो हेल्दी, और वहां पे देर इज नो कॉम्पिटिशन इन लाइक द डोमिनेंसी ऑफ मेल्स और समथिंग, और वहां पे जो है ना डाइवर्सिटी है, एंड आई गॉट टू सी देयर आउटकम्स एज वेल, जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल से। समिंग इट ऑल, वी शुड हैव द वर्क प्लेसेस जहाँ पे हमें इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, एंड जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को प्रोमोट किया जाए। क्योंकि जहाँ पे ये चीज नहीं होगी, वुमेन विल फील अनसेफ, insecure, and they would not be able to perform as much good as they could जब उनको उनके rights दिए जाए। Then there comes encouraging leadership roles. Okay, so इस पे I want to tell you a very personal example of mine. Okay, so encouraging women to pursue leadership roles in STEM is crucial for driving change and inspiring future generations. It is essential to provide platforms for women to lead and influence. Okay, सो लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं कि सपोज एक कंपनी है और उसको अपने प्रोजेक्ट्स और लाइक उसको अपना काम इट नीड्स टू शो इट टू सम ऑफ द डेलीगेट्स दैट आर कमिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि दे नीड टू पिक अ पर्सन जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो कि सपोज उनका एक लीडर हो एज द लीडर ऑफ द कंपनी, एंड ही रिप्रेजेंट्स और ही चेक एंड बैलेंसेस एवरीथिंग दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस इन दैट, एंड ही जस्ट manipulates the work that they have done. लेकिन उसमें क्या होता है कि they try to choose a male person. लाइक वुमेन को लीडरशिप रोल्स नहीं दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज के दे डाउट देयर एबिलिटीज, कि हम औरतों को ये काम देंगे तो इट वुड कम अप विद अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स और समथिंग, लाइक वी आर नॉट बीइंग ट्रस्टेड, वी आर नॉट बीइंग ट्रस्टेड कि हम ये काम कर सकते हैं। तो आई गेस दैट वी शुड बी गिवन, दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग और द परसेप्शन इज रॉन्ग। मेरी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वी आर प्रोवाइडेड विद अ 5 day ओरिएंटेशन जब हम न्यू यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ प्रेसिडेंट हु इज लीडिंग एवरीथिंग, लाइक द एवरी इवेंट, वी आर हैविंग 5 days इवेंट्स, वी आर हैविंग द कॉन्सर्ट्स, वी आर हैविंग द स्कूल इवेंट्स, एंड वी आर हैविंग सो मच मोर, वी आर हैविंग स्पोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन उसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट इज द मेल, like I have seen from 4 to 5 years the president is the male. So once I got to know, I asked the last year's president that why or what is the selection criteria. He said there is no selection criteria. 3 or 4 males come and they select one of them. So I said, what if the woman comes? तो उन्होंने कहा कि पहली तो बात है कि लड़कियां आती ही नहीं है, एंड इफ दे कम तो उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है कि द प्रेसिडेंट शुड बी अ मेल। सो दिस इज एक्चुअली नॉट इनकरेजिंग लीडरशिप रोल्स, लाइक उनको इस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं किया जाता है कि दे कैन डू बेटर एज वेल, एंड इन माई ओपिनियन वुमेन कैन ऑल्सो डू मच बेटर इफ दे आर गिवन द ट्रस्ट, द कॉन्फिडेंस एंड द पोटेंशियल दैट दे कैन डू इट। ओके, then there comes celebrating achievements, and it is very important. This is basically appreciation. So here I would like to quote a sentence, and that is that if you appreciate someone, it can make their day or it can even change their lives. So celebrating achievement means that if women or if like anyone in the nation or if like anyone in a workplace is working and they're doing good, we need to appreciate them. Like in our daily lives also, it's a very good habit to appreciate small things or appreciate a small act of someone, if he or she is your friend or anything. But appreciation is in general a very good habit. Appreciation in professional life and in workplace, अगर आप आजकल देखो तो appreciation कहीं पे भी नहीं. Like I myself is working somewhere, तो वहाँ पे क्या होता है कि वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, लेकिन इफ आई एम डूइंग समथिंग राइट एवरीथिंग, नोबडी सेज एनीथिंग, लेकिन कोई गलती हो जाती है तो लाइक वी हियर अ लॉट फ्रॉम द पीपल। तो दिस इज समथिंग कि ओके, हमें बताना चाहिए कि ये आपकी गलतियां हैं, दीज आर योर वीकनेसेस एंड वी नीड टू वर्क ऑन देम। लेकिन आई बिलीव के साथ साथ जो एक एप्रिसिएशन वाली चीज है उसको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन से जो एक बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है, आई कैन नॉट इवन पुट इनटू वर्ड्स कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको कितनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वी कैन डू मच बेटर। तो समिंग दिस ऑल, एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क प्लेस एंड फॉर वुमेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जाता, और जब मौका दिया जाता है और उनको अप्रिसिएशन मिलती है तो दे बिलीव इन देयर सेल्फ मोर एंड दे से यस वी कैन डू इट। सो
appreciation is very important. Then there comes future of women in STEM. Okay, the future of women in STEM is bright with continued effort to break the barriers. Okay, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, कंसिस्टेंसी इज द की। तो पहली तो बात है अपने मकसद पे कंसिस्टेंट रहने। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर इज ब्राइट बट देयर इज अ कंडीशन फॉर इट। इट इज ब्राइट विद द कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू ब्रेक द बैरियर्स। We need to have a lot of courage. We need to have the confidence, and we need to utilize our potential to break the barriers and to speak up for ourselves, for the betterment of the society, and for innovation, for diversity, and for the progress in various fields. Okay, so this is just a pictorial view. I just want to give you an example. कि suppose हमारे पास एक puzzle है, and if we only connect the two pieces of the puzzle, it is still empty. इसके empty होल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पजल के सारे पार्ट्स लें और उसको ज्वाइन कर दें तो वी गेट अ कंप्लीट पजल। तो इससे वी गेट टू लर्न दैट अगर हम एक चेंज लाना चाहते हैं तो कभी भी एक बंदा चेंज नहीं लेके आ सकता। वी हैव टू स्टैंड एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन टू फुलफिल आवर ड्रीम। और जो हम एक मकसद लेके चल रहे हैं कि हमने इन बैरियर्स को ब्रेक करना है, वी नीड टू फर्स्टली यूनाइट आवरसेल्व्स। वी नीड टू बी अ कम्युनिटी जिसमें हम वुमेन को उनके राइट्स दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनको एम्पावर करें। सो इससे क्या होगा कि वी कैन फॉस्टर एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड वी कैन अनलीश द फुल पोटेंशियल ऑफ द वुमेन इन स्टेम। So, summing this all, I would say we need to unite ourselves. We need to be like a community to fulfill our dream or to fulfill our potential of women empowerment. Okay. So, summing all of my discussion, I would say that empowerment of women in STEM through breaking barriers is not only a matter of equality, but also a catalyst of our progress and innovation. Obvious सी बात है, जब half of the population हमारे जो है वो women है, and if we educate them, if we give them their rights, if we give them equal opportunities, if we provide them with the opportunities, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमें फ्रूटफुल आउटकम्स नहीं मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट विदाउट वुमेन आप काम नहीं कर सकते हैं और लाइक द स्टेट कैन नॉट बी successful, but my main point is कि when women are given the rights तो उससे भी आपको fruitful results मिलेंगे। They won't let you down because they will be having their own identity, their own recognition, and they would work as a team with the within the workplace, and obviously we will get the fruitful results. There's some hand raised. Yes, please. There's So it was Furkan. it was all from your side, Miss Ramla. Yeah, this is all from my side. Now over to your question. All right, all the participants. Now, you have any question, you may raise your hand as I come to know that you have any question. As Assalamualaikum. I can know you one by one. Walaikum Assalamualaikum. assalam. Walaikum assalam. Do let me know if Ma'am. I'm not audible. Yes, you are audible. Okay. Yes, Mr. Furkan, you can ask the question. Thank you very much, ma'am, for this very important session and information you provided to us. So No worries at all. my question is that can you provide any example so for women empowerment that we men or male voice can contribute our part to improve promote women? And second question is that in a society where a man is not powered fully for his right, so how can he empower women? Okay. अच्छा, आई गॉट योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पूछना चाहते हैं कि एज अ मेल आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि जैसे एक गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वैसे हर इंडिविजुअल को भी काम करना चाहिए। इवन आई मस्ट से कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए औरतों को भी बहुत काम करना चाहिए। लेकिन एज अ मेल व्हाट यू can do is if suppose you're working in a community
लाइक आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू आर एट अ गुड पोजिशन जहाँ पे यू कैन मेक डिसीजंस, सपोज इफ यू आर द CEO ऑफ एनी कंपनी, और सपोज इफ यू आर लाइक ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट और समथिंग, तो मैंने बोला था क्रिएट पॉलिसीज। मैंने बताया आई हैव विजिटेड 2 or 3 वेरी गुड वर्क प्लेसेस, लाइक देवर द ऑफिसेज एंड हैव सीन देयर। तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इफ यू आर ऑन द मैनेजरियल पोस्ट और लाइक दिस, तो व्हाट यू कुड डू इज टू मेक सच पॉलिसीज के उनको, ताकि और फिर आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। एंड सेकेंडली, इफ यू आर नॉट ऑन द मैनेजरियल पोस्ट, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है कि अप्रिशिएट द वुमेन। अगर आप अपनी कम्युनिटी में हैं एंड यू सी द वुमेन आर वर्किंग, पहली तो बात यह है कि जैसे बहुत सारे ये जो जैसे अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, तो मुझे काफी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है कि जैसे ये बलूची टाइप वुमेन होती हैं, तो ये अपने वो बना रही होती हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, उनकी जो कल्चरल चीजें होती हैं। एंड सम पीपल, सम यंग पीपल, दे आर ब्रिंगिंग देम ऑन इंटरनेट, लाइक विदाउट लाइक विद हाइडिंग देयर फेसेस, दे आर ब्रिंगिंग देम ऑन इंटरनेट, लाइक उनके बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा होता है। और फिर इस तरह से दे आर गेटिंग, लाइक उनकी सेल्स हो रही होती हैं, और फिर क्या हो रहा होता है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिल रही होती है, फिर वो और ज्यादा अच्छा काम कर, अच्छा पहले भी वो अच्छा ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो उस पर और ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं एवरीथिंग, और उसको ब्रॉडन कर रहे होते हैं। तो मतलब एज एन इंडिविजुअल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, सपोज अगर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग विद द वुमेन, जस्ट गिव देम द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। और अगर आपको, इफ यू हैव द पावर कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज शेयर कर सकते हैं, तो शेयर दोज अपॉर्चुनिटीज विद द वुमेन एज वेल। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आप ये काम कर सकते हो। एंड कैन यू रिपीट योर सेकंड क्वेश्चन प्लीज? Actually, my second question was that in a society where a man he is slave, he don't have even right to get his power. So how can he raise his voice to have women to empower women? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। इस पे मेरे दो आंसर्स होंगे। एक तो ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि हमारा जो है ना, आज मैं इंटरनेट पे देख रही थी, तो उस पे ये लिखा हुआ था कि आई गेस आई माई सेल्फ बिलोंग टू अ रूरल एरिया, मैं भी अपने गाँव में हूँ क्योंकि मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ है। तो मैं देख रही थी कि आई गेस 60% ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन दिस, इसके ऊपर नीचे था, तो वो रूरल एरियाज से है। तो आई गेट इट कि रूरल एरियाज में तो वैसे भी क्या होता है कि मेल एम्पावरमेंट भी नहीं होती है, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो उस पे आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं कि जो होम बिजनेसेस होते हैं, जो लेडीज के होम बिजनेसेस होते हैं, इफ यू कैन प्रमोट देम तो आप करें। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट एट देयर ओन लेवल। बिकॉज मैं किसी को टारगेट नहीं करी, मैं किसी को पॉइंट नहीं करी। आई हैव सीन, मैंने बहुत वो भी देखा है, लेकिन आई हैव सीन कि बहुत सारी जगहों पे वुमेन आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। तो मैं तो कहती हूँ एम्पावरमेंट के लिए काम करना तो बाद में आता है ना, सबसे पहले तो आ जाता है उनकी रिकॉग्निशन, उनकी आइडेंटिटी और उनकी रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट आप, एवरीवन, एवरी गाय लिसनिंग हियर, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इफ यू ओनली रिस्पेक्ट द फीमेल्स, तो मेरे ख्याल से आप वुमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो बात होगी रूरल एरियाज की। अगर आप अर्बन एरियाज में हैं, तो अर्बन एरियाज में आई कैन टेल यू कि हाँ, अर्बन एरियाज में मेल एम्पावरमेंट है काफी ज्यादा है, बल्कि मेल डोमिनेंसी कहनी चाहिए। या अगर हम अपना टॉपिक की बात करें कि वुमेन इन स्टेम, तो उसमें तो मेल डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है। मैं अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं सीख सी हूँ, और उसमें लेस देन 25% ऑफ द फीमेल्स हैं और बाकी सब मेल्स हैं। तो लाइक एक मेल डोमिनेंट एरिया में जाना, इसके लिए आपको वैसे भी बहुत करेज चाहिए होती है, लेकिन अगर उसमें भी आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, यू आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, यू आर नॉट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटीज, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी हर्टफुल कि हम लोगों का जो अंदर का पोटेंशियल होता है या जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, वो वैसे ही मर जाता है कि वी डू नॉट इवन ट्राई टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। तो आई बिलीव कि आप लोग ये कर सकते हैं। So, all Okay, right. ma'am, I have And one the question. participant having any other question? So, over to Mr. Yes, I have Iftikhar. one question. Yes, you can ask. Yes, thank you. Thank you for giving me opportunity to ask question. I वेलकम। hope, ma'am, you're doing well. I have one question related. It's personal about you. What makes you a strong woman? Like, आप what थोड़ा do you सा think? ऊंचा बोल सकते हैं? आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। It is an internet issue. No, I was asking like, what makes you a strong woman? Like, I don't know whether this presentation was your personal opinion. Can you hear me? I am so sorry, I cannot hear. Can anyone repeat his question? Yes, can you hear me now? जी जी, मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। Okay, I was saying that what makes you a strong woman? Like, What do you makes me think a as strong woman? yourself? What makes me a Yes. strong woman? Yeah, this was my question. अच्छा,
ओके, नो डाउट आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई एम स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। मैं एक गांव से हूँ, ठीक है, और मेरा ये ख्याल है कि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं ना, चाहे वो कोई लड़की है चाहे वो कोई लड़का है, तो उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। लाइक मैं कहूँगी थोड़ा सा ज्यादा, वैसे तो कोई भी बात आसान नहीं होता है, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू गेट इनटू देयर, I am लेकिन from rural area. मेरे लिए इट वाज वेरी हार्ड। तो व्हाट मेक्स मी अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज माय गोल्स, माय एम्स, एंड लाइक आई नीड टू डू समथिंग इन लाइफ। जो एक मेरा मोटो ऑफ लाइफ है ना, वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनाता है। एंड देन द ऑब्वियसली द एफर्ट्स ऑफ माय पेरेंट्स भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनाते हैं कि उनकी इतने एफर्ट्स हैं। लाइक माय मदर अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव में रहते हुए भी शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी। तो मैंने जब आपको मेंटोर की बात की थी, तो माय मदर इज माय मेंटोर। लाइक उसी जगह पे वो रही हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, एंड शी इज अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, ये तो मतलब आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। तो शी इज़ माई मेंटोर। तो लाइक her efforts, their sacrifices and my goals, my क्या कहते हैं, जो एक पोटेंशियल है अंदर का, मुझे पता है कि मेरे अंदर भी है, हर एक के अंदर है। और मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे जैसी एक ऑर्डिनरी सी लड़की है और वो इतना कुछ सोच सकती है या कर सकती है या इतना सेक्रीफाइस कर सकती है, तो यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं जितने लड़के हैं, दे कैन ऑल्सो डू इट। तो यस, दिस मेक्स मी अ स्ट्रॉन्ग वुमन। So now, That's great. And Mr. Ahmed. I have another one question. I have another one question. जी So जी, wait, पूछिए wait. पूछिए। Let आज आपके जितने सवाल हैं आप लोग पूछ लें। बाकी Can you को भी make कोई चांस distinction मिलता है, between पहले दूसरों को लो independent करते women हैं, and अगर उनका empowered कोई women? क्वेश्चन नहीं है तो देन अलो करेंगे। मिस्टर, वेट करें थोड़ा। इफ्तिकार, पहले एक और मेंबर को ले लेते हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है देन आपके पास आ रहा Okay, हूँ, अगर उनका okay. किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, ताकि सबको इक्वल चांस मिल सके। सो ओवर टू जी मिस्टर जी, अहमद। आई वांट कि यहाँ पे भी इक्वालिटी हो और सबको चांस मिले। Yes, ma'am. जी May I? मिस्टर, So यस my अहमद, यू कैन। question is that as Pakistan is an underdeveloped society, so when we जी talk of underdeveloped society, so all humans are underprivileged, not only women. Means including men and women both. So why don't we speak of human empowerment nowadays? We must emphasize on human empowerment instead of only woman empowerment because this is, I think, the need of our to change our norms to include both the genders because both the genders as far as I know that are the wings of the society and without any one wing of these both no society can develop and especially our society. So what do you think about it? अच्छा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैंने वो सर्च किया, तो इट वाज अराउंड, आप ये कर लें कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। तो वो जो मेल की भी 50% पॉपुलेशन है, उसमें से बहुत कम एक कोटा है कि जो एजुकेटेड है या जो अर्बन एरियाज से है। मैंने बताया ना, लाइक मोर देन 60% और समथिंग वो आपके रूरल एरियाज से हैं। तो रूरल एरियाज में आपको वैसे भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि हमें ना वो गाइडेंस ही नहीं दी जाती है। हमें वो गाइडेंस ही नहीं दी जाती है कि कैसे आप अपना स्किल डेवलप करो एंड समथिंग। और ये जो अपनी ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात किया, आई रियली लाइक इट कि पीपल थिंक लाइक दिस। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे फोर्स इसलिए करी थी क्योंकि वुमेन को ना बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे आई सी माई विलेज, अच्छा पहले मुझे भी यही सब लगता था। देन आई स्टेप्ड आउट, और बहुत मुश्किलों से आई स्टेप्ड आउट क्योंकि मुझे ना इजाजत थी एवरीथिंग फॉर माई। मेरे गांव में तो कोई कॉलेज है ही नहीं, ठीक है। मेरे गांव में सिर्फ वो है, मेट्रिकुलेशन है। मैं कॉलेज के लिए इस्लामाबाद गई, फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद गई। तो जब मैं वहां पे रही, व्हेन आई गॉट टू नो पीपल, व्हेन आई गॉट टू नो एवरीथिंग, तो मुझे वहां जाके पता चला कि मतलब अम, जिंदगी तो किसी और चीज का नाम है। ये तो नहीं है कि बस आप मैट्रिक कर लो तो आप घर बैठ जाओ एंड एवरीथिंग। तो फिर मुझे थोड़ा सा इस चीज का भी पता चला, द वुमेन एम्पावरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एवरीथिंग। तो अभी जब मुझे अपने गांव में वही चीजें दोबारा देखने को मिलती हैं, तो मुझे बहुत हर्टफुल फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड जो एक ह्यूमन एम्पावरमेंट है ना, उस पे भी बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली आज हमने एक टॉपिक पे बात की है, लेकिन ह्यूमन एम्पावरमेंट इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, क्योंकि एज अ नेशन जब आप बात करते हो तो आपको ना, जो आपको सिर्फ एक 50% नहीं देखना, आपको दूसरा 50% भी देखना है। और दूसरा जो 50% है वो मेल से ही बनता है। और उस 50% में भी मेरे ख्याल से लेस देन 25% आर एजुकेटेड। मतलब इलिटरेसी रेट इतना ज्यादा है। तो ह्यूमन एम्पावरमेंट पे बात करनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने एक बात की थी कि जो आपको एक ना एजुकेशन देनी चाहिए, और वो एजुकेशन होनी चाहिए सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं। क्योंकि आप लोग सब जो यहाँ पे आए हुए हो, या तो आप यूनिवर्सिटीज से होगे, या ग्रेजुएट होने वाले होगे, या एफएससी लेवल पे होगे, लाइक पढ़ आप सब रहे हो।
मतलब एकेडमिकली सब पढ़ रहे हो, लेकिन स्किल डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 10% से ज्यादा में से किसी को सिखाया जा रहा हो। और वो जो 10% भी स्किल डेवलपमेंट सीख रहे होंगे ना, वो या तो खुद से सीख रहे होंगे या अपने बड़ों से, या आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई मेंटोर होगा या समथिंग लाइक दैट। तो जो स्किल डेवलपमेंट है ना, आई रियली नीड टू टॉक ऑन दिस, लेकिन मुझे लगता है टाइम कम पड़ जाएगा कि हाउ कि मैंने कैसे स्किल डेवलपमेंट वाली चीज अपने अंदर थोड़ी सी इंकलकेट की थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा एक पुश देना चाहिए एक बंदे को टूवर्ड्स देयर गोल्स या टूवर्ड्स देयर स्किल्स के क्या क्या चीज वो कर सकते हैं, और देन एक बंदे को एक पाथ मिल जाता है, एक राइट पाथ मिल जाता है, एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट, और फिर वो अपना एक स्किल इस हद तक बना लेता है कि उसको कैश करने शुरू कर देता है। तो यूर वेरी राइट कि ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए की है क्योंकि आई माई सेल्फ इज अ वुमेन एंड आई सी वुमेन एम्पावरमेंट, आई सी नो वुमेन एम्पावरमेंट। सो जब मुझे ये चीज मिली तो आई सेड आई टॉक अबाउट इट, बट लाइक यस, ह्यूमन एम्पावरमेंट पे बात होनी चाहिए। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आई वुड जस्ट से कि वर्क ऑन योर स्किल्स। एक जो एकेडमिक है दैट इज So, इम्पोर्टेंट, बट all वर्क ऑन right, योर now, स्किल्स। now we'll be having one last. यस मैम, So now थैंक we'll यू। be having एंड last question सिर्फ from एक Mr. गुजारिश है Furkan. कि आई थिंक जैसे आपने कहा ना 50% दूसरे भी हैं, तो आई थिंक कभी मेन एम्पावरमेंट पे भी टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि वो भी काफी हद तक जो है ना सप्रेस्ड है हमारी सोसाइटी में। ऐसा वो तो अगर बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है वो ही सप्रेस्ड है ना, तो फिर उसमें तो फिर मेल और फीमेल आता ही नहीं है। जब कंट्री सप्रेस्ड है तो फिर आई गेस किसी को राइट्स नहीं मिलते। यहाँ पे तो बस फिर यही है कि जिसके पास पावर है वो पावर को यूटिलाइज करेगा एंड बाकी सिर्फ सफर करेंगे। तो जो आप ह्यूमन एम्पावरमेंट कह रहे हो ना, वो एक ये है कि वो तो फिर एज एन ओवरऑल आपको एज अ नेशन आपको फिर उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन यस, वुमेन एम्पावरमेंट तो ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल ही सप्रेस्ड है। So, all right, we have two or more raised hands, but as we are reaching our time limit, we will conclude our session. So, thank you so much, Ms. Simla, for sharing wonderful knowledge about this much Welcome. needed topic and providing It was awareness. very nice talking to So, you all. all the participants, thank you so much for joining. In few days, we will come up with another informative session. Till now, that's all for my today's session. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.